पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आज के हमारे खास मेहमान हैं एस प्ले डायरेक्टर विशाल असरानी, जो ग्लोबली वन ऑफ द मोस्ट फेम्ड एनिमेटेड सीरीज माशा एंड बेयर का लाइव थिएट्रिकल अडेप्टेशन डायरेक्ट कर रहे हैं, विच इज गोइंग टू हैव अ रन ऑल ओवर द नेशन। मुंबई में ऑलरेडी हो चुका है, बहुत सारी खबरें उसके बारे में आ चुकी हैं, अब रेस्ट ऑफ द सिटीज एंड टाउन्स में होना है। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा और आगे हम क्या एक्सपेक्ट करें, ढेर सारी बातें विशाल से करेंगे। बट सबसे पहले विशाल, अ वार्म वार्म वेलकम टू यू ऑन आवर प्लेटफॉर्म। Thank you. Thank you very much. ओके, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शोज की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। बच्चे जानते हैं, बच्चों के पेरेंट्स उनकी वजह से जानते हैं। सो यू हैड अ सक्सेसफुल रन इन मुंबई, टेल मी हाउ वाज इट? It was wonderful. बहुत मजा आया. Actually, सच में बताऊं तो I wanted to be a child again and be in the audience and experience the fun. क्योंकि इतने बड़े बेर चढ़ के नीचे स्टेज से आ रहे थे, माशा आ रही थी और बच्चे जो खुशी से चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, तो मुझे भी लगा कि अगर काश मैं बच्चा होता तो मैं भी यही करता. राइट, अच्छा, तो ये तो आपका रिएक्शन था एज एन अडल्ट एंड ऑब्वियसली एज बीइंग अ डायरेक्टर। बच्चों के साथ पेरेंट्स का रिएक्शन देखा आपने, वो कैसा था? आई थिंक बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि इस एज में जो बच्चे होते हैं, पेरेंट्स उनके साथ सब देखते हैं, हम्म। मॉनिटर करने के लिए कि कैसा सीरीज है, ठीक है नहीं है, पेरेंटल कंट्रोल रहता है. तो उन्होंने जो देखा हुआ है माशा, और माशा इतनी क्यूट सी कैरेक्टर है और उसका सीरीज और स्टोरी भी कितना मजेदार है कि आई थिंक वो बच्चों और एडल्ट्स दोनों को पसंद आता है. तो हम्म। पेरेंट्स भी इतने खुश थे, और कुछ पेरेंट्स तो बच्चे ऐसे ही देख रहे थे पर पेरेंट्स चिल्ला रहे थे, पेरेंट्स डांस कर रहे थे, तो वो देख के बहुत मजा आया हमको. राइट, अच्छा, ये टीवी पे एक एनिमेटेड सीरीज बच्चे देखते आए हैं, पेरेंट्स उनके साथ देखते आए हैं, बट टू ब्रिंग इट लाइव ऑन अ स्टेज जहां पर ऑडियंस फिजिकली बैठ के देख रही है, मेरे तो, मैं बात कर रही हूँ, ट्रस्ट मी, गूजबम्स हो रहे हैं। सो यू बीइंग द क्रिएटर ऑफ इट ऑल, ये कैसा सरियल एक्सपीरियंस था? आ, बहुत पहले तो हम बहुत नर्वस होते हैं हमेशा, क्योंकि इसमें बहुत स्पेशल इफेक्ट्स है, कॉस्ट्यूम्स बहुत बड़े हैं, एक्टर्स को वो मैनेज करने के लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ी, कॉस्ट्यूम्स बनाने में बहुत टाइम लगा. और हमेशा हम ऑडियंस में बैठते हैं कि सब स्पेशल इफेक्ट्स बराबर हो जाए, सब अच्छे से हो जाए. एंड इट वाज रियली सरियल, बिकॉज वहां बैठ के व्हेन यू सी कि हमने जो कंसेप्चुलाइज किया था कैसे होगा, कब करेंगे, कहाँ से लाइट आएगी, क्या होगा, जब वो एक्चुअली ट्रांसलेट होता है स्टेज पे, तो बड़ा फुलफिलिंग होता है और बहुत मजा आता है देखने में. राइट, अच्छा, आप इस फील्ड में रहे हैं फॉर ओवर 30 इयर्स, यू टीच ऑल्सो एंड यू आर वांटिंग, जो अभी हमारी नई जनरेशन है, कि वो थिएटर के लिए उतना ही लव उनके लिए, उनके अंदर हो जितना आपका है। बट ये आइडिया विशाल कैसे आपको आया? आपने इसके पहले भी बहुत सारे अडेप्टेशंस को लाइव किया है, बट टू नाउ ब्रिंग माशा एंड बेयर विच इज ओनली सेकंड टू पेपा पिग, जो मतलब बच्चा बच्चा जानता है, तो ये कहाँ से इंसेप्शन हुआ कि अब इसका लाइव अडेप्टेशन करेंगे? टू बी ऑनेस्ट, ये वायाकॉम 18 ने मुझे अप्रोच किया कि आप ये करोगे. तो उस टाइम तो मुझे माशा का कुछ पता नहीं था, मेरे बच्चे नहीं हैं, मेरे सारे स्टूडेंट्स अभी बड़े हो गए हैं, तो हमें कोई आइडिया नहीं था. और मैंने बोला माशा एंड द बेयर पता नहीं क्या है. फिर हमने थोड़े कार्टून्स देखे एंड आई सेड वाओ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. एंड फिर हमारी कपल कपल मीटिंग्स हुए. बहुत सी चैलेंजेस थी कि हम वो कॉस्ट्यूम्स कैसे बनाएंगे, क्योंकि सब सब कुछ यहाँ पे बनाया हुआ है, कुछ अब्रॉड से नहीं आया है, राइट फ्रॉम द रिकॉर्डिंग्स टू वॉइसेस एंड कॉस्ट्यूम्स, सेट्स, लाइट्स, डिजाइन, सब कुछ यहाँ पे हुआ है, एलईडी विजुअल्स. एंड आई थिंक ये आई आई वाज वेरी हैप्पी कि ये प्रोजेक्ट मेरे लैप में गिर पड़ा और मैंने किया, क्योंकि आई वुड नॉट हैव वांटेड टू मिस इट फॉर एनीथिंग इन द वर्ल्ड. राइट, बट ऑब्वियसली इतना एक्स्ट्रा वैगेंट है ये, द होल शो, सो इट मस्ट हैव कम विद अ सेट ऑफ चैलेंजेस, राइट? राइट फ्रॉम कास्टिंग टू कॉस्ट्यूम टू, जो भी आप बता रहे हैं कि म्यूजिक भी है, और जब थिएटर की हम बात करते हैं, सो एवरीथिंग हैज टू बी सो प्रिसाइज, क्योंकि वो लाइव हो रहा है, उसमें कट और फिर से वापस करने का, रीशूट करने का कोई स्कोप नहीं होता। सो यू आर मेकिंग इट साउंड वेरी इजी विशाल, बट मैं थोड़ी वो प्रोसेस के बारे में जानना चाहती हूँ। See, process is actually, for us, it's very easy because we've been doing this for years and years and years. And for me, my biggest support
because we are three directors. There's me, there's Gigi Subi, and there's Sarosh Nanavati. And I truly believe with the three of us, हम लोग इतने critical हैं कि एक दूसरे को छोड़ते नहीं, चबा जाके थूक देते हैं बात कि नहीं ये ठीक नहीं है, ऐसे ही करना है, वैसे करना है। तो हमको एक चैलेंज लगा और हमने बोला कि चलो कर लेते हैं, और हम्म। कर लिया। प्रोसेस लंबा था, बहुत टाइम लगा। रात को 2-2 3-3 बजे तक हम रिकॉर्ड करते थे। रिकॉर्डिंग्स अप्रूवल के लिए जाते थे रशिया, वहां से यूके जाके वहां से अप्रूवल्स आते थे। एंड लकीली वी आर वेरी हैप्पी, क्योंकि हर एक रिकॉर्डिंग, हर एक वीडियो जो हमने बनाया वो पहले शॉट में अप्रूव हो गया। तो आई थिंक उससे बहुत कॉन्फिडेंस मिला कि यस, दिस इज अ लार्जर देन लाइफ प्रोजेक्ट एंड जरूर कर पाएंगे। राइट, बट जब हम कैमरे के लिए कोई चीज बना रहे होते हैं, आई एम श्योर उसमें भी उतनी ही मेहनत एक क्रिएटर करता है। बट एक स्कोप होता है कि चलो एरर हो गया तो उसको आप ठीक कर सकते हो। बट in spite of all these preparations, in spite of all the recordings, जब आप पहला शो कर रहे थे, when you knew that there is going to be a live audience और आपके सबसे बड़े critics यानी कि बच्चे होंगे वहां पर, so how many butterflies did you have in your stomach? I don't know the number. I can't tell you the number. There were butterflies in my tummy, my fingers were crossed, toes were crossed, kidney, liver, सब कुछ क्रॉस था कि प्लीज कोई मिस्टेक नहीं करना आज। एंड नहीं हुआ। बहुत से अच्छे एक्टर्स हैं, डिपेंडेबल एक्टर्स हैं, बैक स्टेज क्रू फिनोमिनल है, अपने लाइटिंग डिजाइनर सारे अच्छे हैं। तो आई थिंक हैविंग अ ग्रेट टीम, दिस टीम हैज वर्कड विथ मी फॉर द पास्ट 15 years. तो Okay. I could just sit in the audience and say I can be part of the audience and watch the show. राइट, राइट, राइट। एंड मुंबई का, जैसे मैंने बहुत सारे रिव्यूज पढ़े, देयर वर अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटी मॉम्स एंड पेरेंट्स जो कि अपने बच्चों के साथ आए, एंड दे सेड वाओ इट्स बीन सच अ अमेजिंग एक्सपीरियंस। तो बच्चों की तो कहानी अलग ही थी, ये जो पेरेंट्स थे उनके कमेंट्स थे कि भाई बड़ा मजा आ गया। सो डिड एनीबॉडी अप्रोच यू एंड गिव यू काइंड ऑफ अ फीडबैक और अ कॉम्प्लीमेंट? Yes, strangely बहुत से बच्चे आए थे जिनके पेरेंट्स को मैंने सिखाया जब वो बच्चे थे। अच्छा। दिस वाज द सेकंड जनरेशन जो आया था, एंड वो उनके बच्चों को बोल रहे थे ये सर ने हमें सिखाया था जब हम बच्चे थे, उनके प्लेस होते थे और वो भी इतने अच्छे थे। एंड अब मैं सोचता नहीं, वो उतना टेक्नोलॉजी नहीं था, इतने अच्छे नहीं थे वो प्लेस। पर आई थिंक बच्चों, वो बच्चे थे तब, और उनके बच्चों को जब वो दिखाते हैं, वो कहते हैं कि ये इससे बेटर कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि लाइव शोज लाइव शोज होते हैं, उसका हम्म। एक्सपीरियंस कुछ अलग होता है। और आई थिंक पेरेंट्स की जो कमेंट थी विच आई रियली एंजॉयड वाज कि इतना इंटरैक्शन था कैरेक्टर्स और एक्टर्स और बच्चों के बीच, कि हमने सारे एक्टर्स को ऑडियंस में लाया था, बच्चों के साथ वो डांस कर रहे थे। बबल्स वाला एक सीन है वेयर देयर आर ह्यूज बबल्स ऑन स्टेज, सोप बबल्स, एंड उसको फिर हम ट्रांसपेरेंट बॉल्स को ऑडियंस में फेंकते हैं, एंड सारे बच्चे पेरेंट्स उठ के डांस करते हैं उसके साथ। एंड वी इनकरेज, जैसे हम्म। Gigi and I have this thing for all the shows, we encourage the children to think that it is a party more than राइट। just a show. तो उनको कहते हैं गेट आउट ऑफ योर सीट्स, माशा उनको बोलती है गेट अप, जॉइन विद मी, डांस, कॉपी माय मूव्स, एंड सारे बच्चे हैं जो उठ के डांस करते हैं। एंड वो देख के इतना मन भर जाता है कि वी सक्सीडेड, बिकॉज द चिल्ड्रन आर द टफेस्ट ऑडियंस टू प्लीज। अगर करेक्ट। उनको सब कुछ नहीं मिला जो वो चाहते हैं, 2 मिनट में उनका ध्यान चला जाएगा एंड खत्म। राइट। एंड एज दे से, अगर बिगनिंग अच्छी हुई है सो रेस्ट ऑफ द जर्नी भी आप मान के चलते हो कि अच्छी होगी, सक्सेसफुल होगी। सो बाय गॉड्स ग्रेट टचवुड, मुंबई हैज बीन अ सक्सेस फॉर यू। अभी विच आर द अदर सिटीज जहां पर जाना है आपने, एंड व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दैट ऑडियंस? हम जा रहे हैं दिल्ली, हैदराबाद, बैंगलोर। Now, I have performed in all three cities, and I believe that art, theater transcends barriers beyond, whether राइट। it's age, time, space, geographical borders. तो कहीं भी करो, there is always going to be love for theater, and the love of the audiences that I have seen over the years is what makes us want to do this again and again. So I'm pretty sure that we are not going to be relaxed about anything. We're going to push and get the show even tighter, even better, because those audiences are expecting it, and we're going to give them a great show. Right. But Vishal, I want to ask you this question. In a world of cinema, in a world of TV, in a world of now OTT, world of theater, आप कहाँ देखते हैं, especially in the eyes of the younger generation? I think it is our duty as the older generation to make sure कि हमारे बच्चे इस आर्ट को भूल ना जाए।
तो the only way to do it is to expose them to more theater. I keep telling parents कि जब आप चले जाते हो लंदन, स्पेन, कहीं भी जाते हो, look for a performance, whether it is local, whether it is an international performance, any kind of thing. Don't take them only to theme parks and malls. Take them for live performances, show them what art and culture is, because at the end of the day, यही तो है जो हमें हिस्ट्री सिखाता है with art on stage. हम भूल Hmm. जाते हैं कि art is the most healing thing in the world. If you are sad, music can make you happy. If you are upset, you can watch something beautiful on stage and say, wow, life is beautiful. If you are want to feel emotional, you can watch a sad scene. I agree it is also on TV, but there is no pause button in theater. वो लाइव होता है, यू डोंट हैव अ सेकंड चांस, एक बार जो हो गया. So I think the children need to understand, and what we do as an institute, Gigi and I, we do theater with adults, but we also take children in our plays. We Hmm. give them a chance to perform so that they understand what theater is all about, and they understand कि हाँ आगे जाके मुझे ये करना है, because it is a wonderful experience. Right. So also as the teacher of performing arts for over 30 years, ये आप, based on your experience, how much can you say कि, okay, people who know about theater, the adults, वो शायद आते हैं, सीखते हैं, but do you also feel the younger generation has opened their eyes and avenues के, oh, wow, theater? Of course, I think क्या हुआ कि in one way COVID had two effects. वो लॉकडाउन की वजह से everybody did so much of TV, so much of screen time, कि now they were looking for live events. They're looking to get out of the house and go experience something instead of just watching it TV पे या screen पे. Uh, Digital is the future. There is no doubt about it. But you cannot ever replace live. Live will always be live. And I'm just grateful to be a small part of this wonderful world of live theater. Right. But how did you enter this world? कैसे आपकी ये जर्नी शुरू हुई? थोड़ा उसके बारे में. I was 5 years old and I wanted to be a singer. So I trained for 15 years with Anup Jalota. And जैसे होता है, when you become 15, 16, तब Indian culture cool नहीं लगती. So we wanted to be Western. So I wanted to sing Western music. So I decided to do that. फिर थोड़े से radio plays किए. And then I think using the experience of everything that I learned as an actor, I one fine day said, I'm going to take the leap of faith and मैं try करूंगा direct करने. Hmm. So I got together a bunch of people and मैंने अपना पहला play write और direct किया था, वो Chakravyuh. It was based on the Ramayana and it got rave reviews. This is, I'm talking about 30 years ago. And after that, I never looked back because I cannot do a 9 to 5 job. I need to have an 8 o'clock in the morning till 3 o'clock night job, which keeps me creative. And like I'm working at night happily with Gigi sitting by my side, getting new ideas, writing new scripts. And it's been a wonderful journey so far. And I'm hoping for many more years in theater. राइट, बट ये आपकी कहानी सुन रहे हैं और हमारी ऑडियंस भी इंटरव्यू में जब सुनेगी दे में से, ओ वाओ, व्हाट अ नाइस ग्लैमरस लाइफ, कितना सक्सेसफुल इंसान है. बट ऑब्वियसली सक्सेस आल्सो हैज अ स्टोरी ऑफ अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, हार्ड वर्क एंड अप्स एंड डाउन. सो प्लीज आप वो भी बताइए, बिकॉज थ्रू दिस इंटरव्यू पीपल वांट टू काइंड ऑफ गेट इनटू द वर्ल्ड ऑफ ड्रामा एंड थिएटर, तो ये भी एक हो कि भाई हार्ड वर्क एंड चैलेंजेस को फेस करने के बाद ही सक्सेस आती. I think most important in theater was learning. I think that learning curve जो आई जब मैंने शुरू किया, I didn't think anything was too small for me to do. Whether it was production work, के script लेके there were times कि मुझे part ही नहीं मिला, पर I wanted to learn. I wanted to do stuff which was important for me to grow as an actor, as a theater practitioner. तो मैंने क्या किया? I used to say कोई बात नहीं, मैं understudy रह जाऊंगा. अगर एक्टर बीमार पड़ गया तो मैं कर लूंगा. एंड स्क्रिप्ट लेके आई यूज्ड टू स्टैंड इन द विंग्स. आई न्यू द होल स्क्रिप्ट. There were many times there were roles that I wanted to do which I didn't get. I Hmm. got other roles, but I never said no. I never said no to a role. I always said कोई बात नहीं, 2 मिनट का रोल है. And sometimes it does happen that वो 2 मिनट में you steal the entire show. राइट. You put in your 100%. Sometimes it does happen. I mean, there are so many shows where somebody comes and just sings one song and the star of the show, you forget, but you'll remember that one song. And that has happened to me. There have been many auditions I didn't get through, many projects where I have applied for rights abroad for years and years. I applied for rights for Madagascar for 12 years. And every year it was denied. Okay, no, we don't give it to the Indian subcontinent. 12 साल के बाद suddenly एक दिन मेल आ गया,
It's approved, you can go ahead. And Wow. it is that which I think the younger generation needs to understand is tenacity, patience. मुझ में बहुत कम पेशेंस है पर फिर भी मैं बोलता हूँ कि patience is the biggest thing in any creative field. And I think respect, which I have learned over the years, to calm down, to talk nicely, to treat everyone from the dada who does your set to the star of your show equally. Everybody Right. is treated with respect. And I think that's what makes this journey beautiful. And now I don't remember any of the bad. I only remember good because I mean, God has been kind, the universe has been kind. I found a great partner who always supported me. And yeah, so I would just tell the younger children, don't give up. Many times you might not get what you want, but just keep going and it will come. It will. Right, right. And touch wood to all the good that has happened and all the good that will keep happening to you, Vishal. And I think ये इन सब चीजों का mixture है कि एक reason है कि your shows always run into packed houses. But what is the other magic? वो क्या और एक essence डालते हैं आप that there's so many plays, right? But then there is a Vishal Asrani production that happens and then people keep talking about it. So what's the magic Vishal puts into it? I think it's love. It's just love. I mean, we never do a project unless we fall in love with it. And that's what happened with Masha. I think जब मैंने पहले माशा सुना मैंने बोला आई डोंट डू प्लेज, इतने छोटे बच्चों का प्लेज मैं करता ही नहीं हूँ, मैस्किट्स के साथ मैं नहीं करता हूँ. फिर जाके हमने वीडियो देखा, सोचा, एंड देन आई सेड नहीं, देयर इज समथिंग ब्यूटीफुल, देयर इज समथिंग रियली मैजिकल इन दिस. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट आई थिंक, because we are teachers, we always want to teach the children something, they to take away something home. And whether it is something as small as being polite, saying please, sorry, and thank you through our play Snow White, or the power of friendship through Masha and the Bear, acceptance, equality, and we do it in a way where it will stay with them forever. And most importantly, I always say, be who you want to be. uh, you are loved, you are beautiful, you are special, you are unique. And we try and show that in every show that we do. Right. So obviously, I understand right now your hands are all tied up and full with, this nationwide run of Masha and Bear. But what No, are the, not at all. not at all? We're doing 4 projects at the same time, and we Okay. love doing it. It's insane. We're working on Masha and the Bear. We've got the Little Mermaid opening. We're doing a second run of Madagascar. We've applied for Ooh. Shrek. So we live, eat, breathe theater. So we don't work. We don't work ever. We're just having fun. Like सुबह उठ Wow. के, I was just like, okay, interview करना है, पर उसके बीच में 1 घंटा है. Now I'm going to do that. I'm going to make a video for this thing. And it's just great fun. Wow, wow. Thank you for having this passion for theatre because इस passion की वजह से हमें बहुत अच्छे अच्छे live adaptations देखने के लिए मिल रहे हैं विशाल. So thank you so much to you and your team who has been there as your backbone for all this that you've done. And wishing you all the luck for all these projects and for whatever new you take up. And thank you so much for your time for this interview. One last thing I'd like to say before I go. I'd like to thank Viacom 18 because they've been a phenomenal production house to work with. They've never said no to me for anything I asked for. Like any single small thing, no matter how expensive, even if it was out of the budget, they said, you want it, you will have it. That's it. So I just want to say thank you. It's been wonderful. And may the universe also say to you, Vishal, you want it, may you have it. So that's what our wish is for you. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Bye bye.